मोदी जी, जो लोग आपके नाम पे यहाँ पर लूट रहे हैं, वो लोग नेपाल और भारत के संबंध आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा होगा हमारे संबंध बहुत ऊंचाई पर चढ़ गई है। बीच में कोई आदमी मत भेजिएगा, कोई पत्रकार को मत भेजिएगा, कोई एजेंट को मत भेजिएगा, कोई प्रकाशक को मत भेजिएगा। सीधी बात कीजिएगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर टीम, यू हैव टू वर्क विद योर एम्बेसी एंड ऑल। वहां पर देखिएगा, इंटैक्ट रहना चाहिए। साथ में बीच में जगह रख दोगे तो ऐसे लोग आगे आपके नाम ले पे इसको लूटेंगे। वो आपके देश के लिए भी हानिकारक है, हमारे देश के लिए भी हानिकारक है, और इन लोगों के वजह से हमारा संबंध कभी भी अच्छा नहीं होगा। आज राष्ट्रवादी बनना हो तो इंडिया को गाली करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। ये लोग ये बना रहे हैं इनको अपने यहाँ। नेपाल भारत का रिलेशन आप अगर अच्छा चाहते हो, दैट्स नॉट एन इंडिया। दिस इज अ मैसेज टू मिस्टर मोदी। मिस्टर मोदी, वी नीड टू वर्क ऑन दिस. Please don't believe it that the people who are saying your agent is not your agent. They're not your agent, they're not our agent. They're nobody's. They have their interest. And I want some fellow Indians to understand this so that I think I can speak a little bit Hindi also. I want my message to go through the Indian media as well, from Indian television and other media. I really want to give this message very loud and clear to the Indian communities out there. Please listen this carefully, and I really want Indian citizens also understand my message very clear and loud. So I'm going to speak in Hindi a little bit because I speak pretty good Hindi. I've watched good amount of Hindi cinemas also, so it will be easy for people of India to understand the situation also. I'm going to give my statement in Hindi, especially for people of India and Prime Minister Mr. Modi. Modi ji, जो लोग आपके नाम पे यहाँ पर लूट रहे हैं, वो लोग नेपाल और भारत के संबंध आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा होगा हमारे संबंध बहुत ऊंचाई पर चढ़ गई है। ये बोलने वाली बात है। ये लोग जो एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, उन पर विश्वास करना बंद कीजिए। सीधी बात कीजिए। आप कोई एजेंट आपके लिए, आपका ये इंडिया का लाइन है करके यहाँ पर जो चला रहा है, वो धंधा को बंद कीजिए। अगर आपको सच लगता है कि नेपाल और भारत बहुत अच्छे मित्र है और हमारे रिलेशन अच्छा बनानी चाहिए, तो बीच में कोई आदमी मत भेजिएगा, कोई पत्रकार को मत भेजिएगा, कोई एजेंट को मत भेजिएगा, कोई प्रकाशक को मत भेजिएगा। सीधी बात कीजिएगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर टीम, यू हैव टू वर्क विद योर एम्बेसी एंड ऑल। वहां पर देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर नेपाल और भारत का संबंध अच्छा बनाना चाहते हो तो हम लोगों को ऐसे इंटैक्ट रहना चाहिए। साथ में बीच में जगह रख दोगे तो ऐसे लोग आगे आपके नाम ले पे इसको लूटेंगे। वो आपके देश के लिए भी हानिकारक है, हमारे देश के लिए भी हानिकारक है, और इन लोगों के वजह से हमारा संबंध कभी भी अच्छा नहीं होगा। आज राष्ट्रवादी बनना हो तो इंडिया को गाली करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। ये लोग ये बना रहे हैं इनको अपने यहाँ। नेपाल भारत का रिलेशन आप अगर अच्छा चाहते हो, आप इसको हटाइए। आई रियली वांट दिस मैसेज टू गो थ्रू द इंडियन मीडिया एज वेल। मैं आज ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। मलाई क्षमा गर्नु होला, हिन्दी बोल्ने बित्तिकै फेरि अलिकति गाली खाने चलन पनि छ। टिकटक योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, दोनों डेलीगेशंस के सदस्य, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री प्रचंड जी का और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
बीरगंज में नेपाल की पहली आईसीपी बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। अगर हम 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। 3 आईसीपी के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, आप कल इंदौर और धार्मिक शहर उज्जैन की यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir.
May I now call upon the Honorable Prime Minister of Nepal to make his remarks. So. Your Excellency Shri Narendra Modi ji, member of delegation from both sides, friends from media, ladies and gentlemen. Thank you, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for your kind words. I am equally touched by your warm welcome and generous hospitality. This is my fourth visit to India as the Prime Minister of Nepal. I fondly recall my previous visit in September 2008, and then twice in September and October 2016. I bring with me the greeting and best wishes of the government and people of Nepal. We are happy to see the remarkable transformation of India's economic and development landscape under the able leadership of Prime Minister Modi ji. I congratulate Prime Minister Modi ji on completion this week of 9 years in government with far-reaching achievement on many fronts. The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding, and cooperation. Today, as Prime Minister Modi ji mentioned, we made an extensive review of the progress in our relation and renewed our commitment to further strengthen this relation and cooperation. I appreciate Prime Minister Modi ji's neighborhood first policy. In our meeting today, we discussed the ways to further strengthen cooperation in diverse areas including trade, transit, investment, hydropower development, power trade, irrigation, agriculture, connectivity, including air entry routes, railways, bridge, transmission line, expansion of petroleum pipeline, construction of integrated checkposts, as well as cultural and people-to-people contact. As you all witnessed, Prime Minister Modi ji and I jointly launched various projects through remote inauguration, flagging up, and groundbreaking. A number of agreements and MOUs have also been exchanged. We reviewed the progress made in the implementation of the hydroelectricity project in Nepal and toward the construction of cross-border transmission line. It is one of the most important elements of our economic partnership. Nepal's hydropower can not only contribute to our economies and energy security, but also serve as an important factor to realize our climate ambition. I appreciate India's import of 452 megawatt of power from Nepal and requested Prime Minister Modi ji for approval of the import of additional 1,200 megawatt of power from Nepal, including 456 megawatt upper Tamakosi. I thank Prime Minister Modi ji for positive response. Looking ahead, an agreement on the long-term power trade has been completed. On this agreement, India will import 10,000 megawatt of power from Nepal in the next 10 years. This is a major development in enhancing cooperation in this area based on the joint vision statement that the two Prime Ministers issued in April 2022. I also appreciated India's willingness to facilitate the export of hydropower from Nepal to Bangladesh through India. We have agreed that export up to 50 megawatt of power from Nepal to Bangladesh by India would commence soon, and the three countries would work out an agreement to this effect soon. Today, we also witnessed the signing and exchange of the project development agreement for the development of 669 megawatt Lower Arun hydropower project and the MOU on the development of 480 megawatt Phukot Karnali hydropower project. These projects provide a fresh momentum for power sector development and cross-border trade. Prime Minister Modi ji and I agreed to advance the Pancheshwar multipurpose project by concluding the DPR within 3 months
For this purpose, we have directed our respective officials to expedite bilateral discussion. The modalities of implementation will be concluded within 1 year after the approval of DPR by the two governments. We welcome the construction of the Tanakpur Link Canal and agreed that water will be released from Tanakpur Barrage to irrigation command area of Nepal through this canal in a phase-wise manner based on the necessary facilities on the Nepali side. I am happy to state that the vital transmission line project under LOC 4 will commence soon. Prime Minister Modi ji and I discussed other aspects of the cooperation in water resources, including irrigation. We also discussed to resolve the problem of inundation and take appropriate measure for flood control. We have directed our officials to hold meeting of bilateral mechanisms at the earliest to address the issues and find ways for further cooperation before the onset of monsoon. We discussed the promotion of trade and the ways of reducing Nepal's increasing trade deficit with India. India is Nepal's largest trading partner. I have requested Prime Minister Modi ji for non-reciprocal market access to India with more flexible and easy quarantine procedure for Nepal's agricultural products and simplified rules of origin for other products. We also discussed the establishment of well-equipped testing labs along the major border points and formalizing of the arrangement for mutual recognition of test certificate. I requested Prime Minister Modi ji to lifting of the anti-dumping duty on Nepali jute products. Integrated checkposts and dry ports are crucial for trade facilitation as well as for seamless cross-border movement of goods and people. Prime Minister Modi ji and I jointly inaugurated the ICP at Nepalganj Rupediha border and performed remote groundbreaking of the ICP at Bhairava Sunauli border. Similarly, we witnessed the exchange of the MOU on building of an integrated checkpost and dry port at Dodara Chandani. The revised Treaty of Transit was signed and exchanged today. We have also agreed to direct early convening of the Commerce Secretary level mechanism to initiate the process for review of the Treaty of Trade. The MOU between the NPCIL and NCHL signed today will ease the cross-border payments much needed by the business people, students, pilgrims, and travelers of both Nepal and India. We just witnessed the groundbreaking of the phase 2 of Motihari Amlekhganj petroleum pipeline. We look forward to its early construction. We have also reached an agreement for the extension of Motihari Amlekhganj petroleum pipeline up to Chittaun and construction of a new cross-border petroleum pipeline from Siliguri to Jhapa on grant basis. Prime Minister Modi ji and I jointly flagged off the cargo rail service between Batnaha and Viratnagar, Nepal Custom Yards. The passenger rail service between Jairnagar to Kurtha has been extended to Bijalpura. I thank the Government of India for its generous assistance in constructing these railway links. We also held discussion on the early completion of the works in the remaining segment and sustained operation of this railway through training and capacity building of Nepali railway personnel. We discussed about Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. It is operationally feasible for ATR aircraft. We request for approval of high-altitude additional air entry route from Mahendranagar at an early date. We appreciate India's approval for near-border flight operation in the Gautam Buddha International Airport in Bhairava. Nepal, through publishing ILS procedure in the AIP to enhance safety and efficiency of the flight operation. We would like to have regular flights from Nepal's newly built international airport of Bhairava and Pokhara to and from various cities of India. Prime Minister Modi ji and I have agreed to promote cooperation in the field of agriculture.
We look forward to early conclusion of MOU on cooperation in agriculture and in the field of livestock, and we are thankful to the government of India for the gift of improved breed of livestock and hope to receive germplasm of major cash crop, particularly of the cash crop of the sugarcane and coffee. Prime Minister Modi ji and I discussed the boundary matter. I urge Prime Minister Modi ji to resolve the boundary matter through the established bilateral diplomatic mechanism. I commended the role played and initiative taken by Prime Minister Modi ji during India's G20 presidency as well as SCO chairmanship, including for giving voice to the issues of concern to the global south. Nepal is happy to join India's multilateral initiative of the International Solar Alliance and more recently, the International Big Cat Alliance. As India celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav, I congratulate India for all its achievement, be it in the economic growth or industrialization, infrastructure development, or science and technology, poverty alleviation, or expansion of social security scheme, and many other fronts. Nepal sees India's advancement as the opportunity for Nepal. We also discussed about the establishment of fertilizer plant in Nepal in joint venture, and we will try our best to work together for the successful completion of the project. India is Nepal's close neighbor and important partner for the development and prosperity. As Nepal moves ahead on the path of graduating from LDC status by 2026, India's continued support and goodwill remains important for us. We have agreed to maintain the momentum generated by this visit and take effective measures for the implementation of the agreement and understanding reached today and earlier. Today, I am really touched with the explanation of Excellency Prime Minister Modi ji about the agriculture development in Nepal and about the nano fertilizer project and how we can cooperate. It is touching for me. I think that it is touching for the Nepalese people as well. I have extended cordial invitation to Prime Minister Modi ji for a visit to Nepal. I look forward to welcoming him in Nepal soon. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you all for joining. Please remain seated as the dignitaries leave.